morning students, welcome to बाबानॉमिक्स चैनल। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने लास्ट वीडियो में क्या बताया था, हाउ इज नेशनल इनकम एस्टिमेटेड बाय प्रोडक्शन मेथड। यानी स्टूडेंट्स मैंने प्रोडक्शन मेथड आपको पढ़ा दिया विथ प्रिकॉशंस के साथ। अब मैं आज आपको पढ़ाऊंगा हाउ इज नेशनल इनकम एस्टिमेटेड बाय इनकम मेथड। इस वीडियो में आपको मैं इनकम मेथड पढ़ाऊंगा। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मेरा वीडियो देखते हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। स्टूडेंट्स, इनकम मेथड में सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि किस इनकम को नेशनल इनकम में काउंट करना है। बहुत सारे इनकम होते हैं, बहुत तरह के इनकम होते हैं। पॉइंट यह है कि नेशनल इनकम में हम सिर्फ फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं। यानी आपको ये क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। स्टूडेंट्स, फैक्टर इनकम वह इनकम है जो फैक्टर ओनर्स को उसके वर्क के अगेंस्ट में पे किया जाता है। सो आई मीन टू से फैक्टर इनकम्स आर दोज इनकम्स which are paid in against of factor services, but transfer incomes are paid or transfer incomes are given without any factor services. यानी फैक्टर इनकम लाइक जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो वी आर यूजिंग द सर्विसेज ऑफ लैंड, वी आर यूजिंग द सर्विसेज ऑफ लेबर, वी आर यूजिंग द सर्विसेज ऑफ कैपिटल, we are using the ideas, innovations and everything of entrepreneurs. So landowner gets rent, capital owner gets interest, laborers get salaries and entrepreneurs get profit. But transfer incomes are given without any work. Therefore factor incomes are called generated income, are included in national income. But transfer incomes are non-generated income, so they are not included in national income. Students, factor incomes are bilateral receipt and bilateral payment. That means ये दोनों साइड से रिसिप्ट भी है और दोनों साइड से पेमेंट भी है। Like I am teaching, I am rendering my services, so what are students are receiving my services. And you people are paying me, तो what I am receiving money. तो मैंने क्या पे किया, अपनी सर्विसेज, और आपने क्या पे किया, मनी। दोनों साइड से पेमेंट हो गया। आपने क्या रिसीव किया, मेरी सर्विसेज, और मैंने क्या रिसीव किया, आपका पेमेंट। तो ये बायलेटरल रिसिप्ट भी होता है और बायलेटरल पेमेंट भी होता है। बायलेटरल का मतलब होता है दोनों साइड, बोथ साइड रिसिप्ट होता है और बोथ साइड पेमेंट होता है। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसफर इनकम सिर्फ यूनिलेटरल होता है, वन साइडेड रिसीव होता है या वन साइडेड पेमेंट होता है। योर फादर इज गिविंग यू पॉकेट मनी, वन साइड व्हाट, रिसिप्ट, और वन साइड पेमेंट फ्रॉम योर फादर इनकम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये वन साइड रिसीव होता है और वन साइड पेमेंट होता है, जबकि ट्रांसफर इनकम सिर्फ वन साइडेड होता है, जबकि फैक्टर इनकम दोनों साइडेड। स्टूडेंट्स, ये तो क्लियर हो गया कि नेशनल इनकम में हम सिर्फ फैक्टर इनकम को इंक्लूड करेंगे। देन हाउ इज इट एस्टिमेटेड? इसके लिए बेस्ट आइडिया है आप मेरे इस चार्ट को फॉलो करो। लुक एट दिस चार्ट स्टूडेंट्स, यू फाइंड व्हाट इज द फर्स्ट सोर्सेस ऑफ इनकम। सो इनकम फ्रॉम वर्क, और वर्क कौन करता है, लेबरर्स। तो इनकम फ्रॉम वर्क, एंड वर्क इज डन बाय लेबरर्स, एंड लेबरर्स आर गेटिंग सैलरी इन थ्री फॉर्म्स। फर्स्ट, सैलरी इन कैश, दैट इज कॉल्ड वेजेस एंड सैलरीज। सैलरीज इन काइंड, फ्री हाउसिंग, मेडिकल अलाउंसेस, फॉर एग्जाम्पल लाइक फीस एंड other expenditures given by employer to employees for his benefit, free food, free cloth, different types of kinds provided by employer to employees. And third, social security contribution by employer to employees.
सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयज, इस चीज पे ध्यान देना है आपको, यानी कंट्रीब्यूट करने वाला एम्प्लॉयर हो और रिसिपिएंट रिसीव करने वाला एम्प्लॉयज होना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, लाइक कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड by employer, contribution of employer in pension, they are called social securities. Students, so हमने आपको बताया first sources is income from work, and who is doing work? Workers की तीन सैलरी क्या है? सैलरी इन कैश, सैलरी इन काइंड and social security contribution by employer to employees. इन तीनों टर्म को आप ऐड करोगे, then you will find compensation of employees. Okay, then second term, the second source of income is called income from property. So property incomes are what? Income from land, that is called rent. Income from capital, that is called interest. Income in against of brand name and copyright, that is called royalty. And the third sources is income from entrepreneurs. आप सबको पता है कि entrepreneurs कौन होता है? Entrepreneurs is one who organize the business. And entrepreneur is getting profit. Remember, the profit has three parts: profit tax, undistributed profit, and dividend. So students, income from property and income from entrepreneurs. Again, I'm repeating, income from property and income from entrepreneurs. इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, then you'll get the operating surplus. So students, यानी आपको ऑपरेटिंग सरप्लस में किस इनकम को लेना है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट को लेना है, इंटरेस्ट को इंक्लूड करना है, रॉयल्टी को इंक्लूड करना है और प्रॉफिट को इंक्लूड करना है. अगर क्वेश्चन पेपर में प्रॉफिट वर्ड नहीं गिवन ना हो तो प्रॉफिट के तीन कंपोनेंट होते हैं जो मैंने लिखा है: प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. रिलायंस इंडिया लिमिटेड को 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ एंड आउट ऑफ 1000 करोड़ रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने 30%, इमेजिनरी एग्जांपल 300 करोड़ गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया. सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट रिलायंस इंडिया लिमिटेड केप्ट फॉर फर्दर डेवलपमेंट, that is called in accounts language capital reserve. That is also known as undistributed profit. That is also called capital saving. So that means it is the surplus of private sector. कई नामों से जाना जाता है. आपको सिर्फ समझ होनी चाहिए कि जिस प्रॉफिट को कंपनीज शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दैट मीन्स प्रॉफिट का वह पार्ट विच इज नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, surplus of private sector. And the last part is called dividend. Dividend means part of profit which is divided among the shareholder. So dear students, अगर प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन ना हो तो आप इन तीनों टर्म को ऐड करना एंड यू गेट द प्रॉफिट एंड दैट प्रॉफिट इज एडेड इन ऑपरेटिंग सरप्लस. सो स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको चार इनकम लेना है. फर्स्ट इज कॉल्ड रेंट, सेकेंड इज कॉल्ड इंटरेस्ट एंड थर्ड इज कॉल्ड प्रॉफिट अगर एंड फोर्थ इज कॉल्ड रॉयल्टी. And the last sources of income is called income from self-employed. There are many peoples in our country who are doing their own business by involving their own factors of production. So that means the incomes they are getting,
दैट इनकम इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम. सो स्टूडेंट्स, फाइनली हमने क्या देखा कि जब हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम को एस्टिमेट करेंगे तो तीन बेसिक टर्म्स आपको याद होना चाहिए. इन लास्ट यू सी द फर्स्ट जनरेटेड इनकम इज कॉल्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. Second generated income is called operating surplus, and third generated of income is called mixed income. At the macro level, at the country level, हम जब इन तीनों इनकम को ऐड करेंगे, then it becomes NDPFC. That means net domestic product at factor cost. Remember, net domestic product at factor cost, which is also known as domestic income. Okay, but at the micro level, at the individual form level, जब हम इन तीन कंपोनेंट को ऐड करते हैं, then it becomes net value added at factor cost. And everyone is knowing we have net domestic product at factor cost. In this net domestic product at factor cost, when we are adding net factor income from abroad, that becomes net national product at factor cost, which is known as national income. So dear students, as usual, हर मेथड का अपना एक प्रिकॉशंस होता है. So students, every methods have their own precautions. मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय प्रोडक्शन मेथड कौन कौन सा प्रिकॉशंस लेना चाहिए. उसी तरह इनकम मेथड्स के भी कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको हमेशा याद होना चाहिए. नंबर 1, only factor incomes are included. That means any type of transfer incomes are not included. Number 2, income from illegal practices like gambling, like smuggling, or any type of illegal practices, their incomes are not included. Number 3, income from windfall gains, unexpected profit, lottery, not included. Similarly, number 4, income from the sale of second hand goods within the domestic territory. ये बात ध्यान से समझना. अगर हम विदिन द इंडिया, विदिन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सेकेंड हैंड गुड्स को सेल करते हैं या परचेज करते हैं, सेल करने से जो इनकम आता है उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में उसकी वैल्यू काउंट हो चुकी है. सिमिलरली, इनकम फ्रॉम न्यू और ओल्ड शेयर्स, बॉन्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि दे आर जस्ट ट्रांसफरिंग द टाइटल चेक. इट्स अ सिंपल पेपर ट्रांसफर, सो दे आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड. तो ऐसे 4-5 पॉइंट आपको याद होनी चाहिए ताकि एट द टाइम ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम ऑफ इंडिया बाय इनकम मेथड आपसे कोई गलती ना हो. स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा हाउ इज नेशनल इनकम एस्टिमेटेड बाय एक्सपेंडिचर मेथड.